देखो राजा, क्वेश्चन 10 द बी पार्ट देखो। मिस्टर सुंदर परचेजेस अ हाउस प्रॉपर्टी फॉर 92,000 on 16th June 1990. He dies on 12th September 1998. Same dates. Dies on same date, ठीक है? The property transferred to Mrs. Sundar by his will. Mrs. Sundar spends rupees 1,40,000 during 2004-5 for reconstruction of the property. Mrs. Sundar sells the house property for 17,75,000. Same value. On 20 March 2025. हो रही लिखा है, बुक इज न्यू ना. Brokerage paid by Mrs. Sundar is 16,750. FMV of the house on 1st April 2001 is 3 lakh. Compute the capital gain. क्या होगा दोस्तों? पहली चीज, साडा ईयर केड़ा 24-25. Index is 363. Yes or no? So sold ਤੁਹਾਡੇ ईयर ਚ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ईयर is 2024-25. मंथ चेंज कितना हो गया था? अप्रैल का था ना, ठीक है? Then it becomes a part of your financial year. Okay, so what's the sale consideration? 17,75,000 minus selling expense brokerage is given 16,750. 17 lakh. This is your NSC, net sale consideration, minus. अब cost कब थी? It was purchased on 16th June 1990 by his husband, and it was inherited by his transferred by his will on 12th September 1998. That was also before base year. So we'll compare the cost with FMV. So cost or FMV, whichever is higher. What is the FMV? 3 lakhs. So 92,000. Here it will be minus indexed cost of acquisition. But in between we'll compare cost or FMV as on 1st April 2001. Whichever is higher. Then you'll do the indexing. 363 upon 100. So higher is 3 lakh into 363 upon 100. That is 10,89,000. Okay. Index cost of acquisition. After that, Mrs. Sundar spends rupees 1,40,000 during the year 2004-5 for reconstruction of the property. ठीक है, reconstruction of the property मतलब improvement in 2004-5. Okay, so indexed cost of improvement also. The cost was 1,40,000. Index 363 divided by 2004-5 indexes 113. So it's 4,49,735. So the balance comes out your to be your LTCG. Check करो, नहीं LTCG.
2,19,515. ओके राजा, अगे देखो एग्जेम्पशंस की पढ़न लगे ਅਸੀਂ एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54। एग्जेम्पशन ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੈਟ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਡੈਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਸੈਟ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੇਲ। ਜਦ ਅੱਜ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੇਲ ਕੰਸੀਡरेशन। ठीक है, जब एक्वायर ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਅੱਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਬਾय ਇੰਡੈਕਸਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ? ਇੰਡੈਕਸ ਕਾਸਟ ਆਫ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ। कंपेयर करके कुछ की होया, इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बट इतने की लिखना चाहिए था, अगर इंडेक्सिंग हुई मतलब वो लॉन्ग टर्म की गल है, तो इट विल ओनली बी लॉन्ग टर्म गेन। अगर इंडेक्सिंग नहीं हुई देन इट कैन बी शॉर्ट टर्म, बिकॉज शॉर्ट टर्म च ਅਸੀਂ इंडेक्सेशन नहीं करते। यस और एग्री? शॉर्ट टर्म च इंडेक्सेशन नहीं होती। ਹੁਣ इस गेन ते ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? टैक्स। एग्री? यस और पर्सन कहता आई डोंट वांट टू पे टैक्स। ठीक है, उस टैक्स तो बचने ਲਈ गवर्नमेंट कहते कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ खुद तरीके दस will give you some ways to getting your income exempt from tax, get the income from tax exempted। okay, so first option ਕੀ ਆਇਆ section 54? जब ਤੁਸੀਂ ਕੀ earn ਕੀਤਾ? long term capital gain on sale of residential house। long term capital gain on the sale of, बोलो, residential house। so ਇੱਥੇ conditions ਕੀ ਹੈ? पहली condition is you should be individual or HUF। कितने पर्सन्स पढ़े सी ਅਸੀਂ स्टार्टिंग? पर्सन्स 7 7 रीड ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ? ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਐਚੁਅਲ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਸੇਲ ਆਫ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਊਸ। ਕਿਹੜਾ ਹਾਊਸ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਡ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਅਗਰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸੇਲ। whether it was self occupied, whether it was let out, that doesn't matter, ਪਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੇਲ। ਉਸ ਹਾਊਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਗੇਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂ ਇਨਵੈਸਟ the same amount for the purchase of another residential house। ਹਾਊਸ ਸੇਲ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦੋ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया फ्रॉम द सेल ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस, उस इनकम नो न्यू हाउस परचेज विच इन्वेस्ट कर। पर्सन कहता कद करिए? यू कैन परचेज अ न्यू हाउस विद इन 1 year बिफोर सेल और 2 years आफ्टर सेल। कई बार पर्सन पहला भी तो नवा घर खरीद लेंदा कि सर शिफ्ट तो हो जाइए फिर पुराना सेल कर देंगे। सो सेल तो बिफोर 1 year दे विद इन और 2 years आफ्टर सेल। एंड अगर कंस्ट्रक्शन करनी तो विद इन 3 years। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द मनी ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। ठीक है, यू वर हैविंग लेट्स सपोज अ प्लॉट
ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟਡ ਫਰॉम टैक्स। सो डायग्राम देखो कितना इजी बन गया। अगर 18th जून 2000 ईयर चेंज कर दिए, योर ईयर इज 2024 25, so 18th June 24 is the part of your year। अगर ਤੁਸੀਂ 18th June 24 ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 19th June 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ईयर ही है, ठीक है। और इस साइड 25 26, दिस इज द रेंज। 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर कादे परचेज ली, और 3 ईयर्स कादे ली आफ्टर वाले टाइम पे कंस्ट्रक्शन ली। यू आर हैविंग द टाइम लिमिट टू स्पेंड दैट गेन और द स्पेंड दैट सेल प्रोसीड्स। ओके, फिर ਤੁਹਾਡਾ गेन की हो जाऊगा एग्जेम्प्ट, ठीक है। उस तो अगली चीज की आओगी माइंड च, ਜੇ ਤੁਸੀਂ गेम खेलना चाह रहे हो गवर्नमेंट की सोचोगे, परचेज कर लो, थोड़ी जगह भेज दो। गवर्नमेंट की कहोगी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, लॉक इन पीरियड ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਪਰਪਸ ਲਈ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਸੋਲਡ ਵਿਦ ਇਨ 3 ਇਅਰਸ। हाँ नहीं कि आज एग्जेम्पशन ਲੈਣ ਲਈ परचेज कर लो, बाद थोड़ी देर बाद फिर सेल कर दो। यू गेटिंग दैट? कुछ पर्सन ਇਹੀ ਸੋਚੂਗਾ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੇਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ 30 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਾਊਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਣੀ 3-4 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 30 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 2-3 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖਰਚ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। गवर्नमेंट कहती 3 इयर्स के विद इन सेल भी नहीं कर सकते। और 1% किसी बंदे ने करता सेल, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਹੋਇਆ। पर्सन कह दे कि सर मैं तो बाउंड हाँ, मैंने पैसे चाहिए आ, पैसे उस टाइम इन्वेस्ट करते सी एग्जेम्पशन लैन ਲਈ, बट मैंने बाई चांस कोई मेडिकल एमरजेंसी आ गई फैमिली च, वी नीड सच अमाउंट, हॉस्पिटलाइज हो गया कोई पर्सन, चाहिए आ, ठीक है सेल कर लो, पैसे आ जाओगे, बट एग्जेम्पशन रिवर्स हो जाए। एग्री ये सर? आफ्टर दैट, so question number 12 the A part देखो राजा। Mr. X provides the following information regarding his transaction for the sale of residential house during the assessment year 25-26. House purchased in 1988 before base year 1,50,000, fair market value 1st April the given है 5,20,000, CII 100, sold in October 24 in your year, CII 363, sold for 28 lakh, amount invested in purchase of another house in April 2025 7 lakh। उन्हीं चीज सीखी कि अगर सेल करके तुसी वो अमाउंट इन्वेस्ट करता इन द परचेज ऑफ अनदर हाउस, कद कद, विद इन 1 ईयर बिफोर द सेल, विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द सेल, और फॉर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन विद इन 3 ईयर्स आफ्टर द सेल। कि ये सेल डेट तो विद इन 1 ईयर है, टू विद इन 2 ईयर्स है एक्चुअली परचेज, यस। So it's eligible for exemption under section 54, yes or no? So ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ same portion जो कल तक ਕੀਤਾ ਸੀ, sale consideration that is 28 lakhs, selling expense nil, NSC 28 lakhs, index cost of acquisition that is cost or FME whichever is higher into indexation क्या होगी 363 upon 100 because it was before the base year. So cost was 150 and FMV was 520. Same only.
So 9,12,400 LTCG. But you invested 7 lakh for purchase of another house within 2 years. Actually, within 1 year only. So it's eligible. So exempt under section 54, 7 lakh. What's remaining? Taxable LTCG 2,12,400. Everyone, yes or no? Clear, Raja? Taxable LTCG, yes or no? Answer in your book is this only 212,400. Yes. Okay. Check the second part. B part. Mr. Z acquired a plot of land on 30 June 2006. 30 June 2006. CII 122 for rupees 7 lakh 20,000 and spent rupees 28,500 on its registration and brokerage, etc. This plot was sold for rupees 23 lakhs. Amount is same 23 lakhs on 30 June 2024. CII 363. He had purchased a house for 4 lakh on 1st August 2000, 1st August 2023 for his own residence. He had paid rupees 5,000 as ground rent per plot held by him. Amount of taxable gain, capital gain under the assessment year 25-26. Okay. What will be the first point? Bolo. What's their plot or house? Plot. Plot. Sale consideration is what's the sale consideration is it? 23 lakhs. Selling expense in it 28,500. Yes. No. Kade आओ कदों दे 28,500 registration brokerage was on the time of purchase. किदे सोचो ना बच्चा ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ठीक है so selling expenses nil NSC 23 lakhs then indexed cost of acquisition ਹੁਣ देखो purchase price was purchase price was 7,20,000 उस टाइम कितने खर्चे हुए सी 28,500 so those will be added to your cost of asset yes or no capitalize कर देना खर्चे ऐसे तो वो ਇੱਥੇ ऐड हो गए वो purchase ਦੇ time ਦੇ ਖਰਚੇ ਆ और ਇੱਥੇ indexing will be 363 upon 122 yes or no so 7,20,000 plus 28,500 into 363 divided by 122 it comes out to
222 7094. Yes or no? LTCG 72906. Yes or no? 72,906. Then next चीज पढ़ो. He invested the amount. Listen very carefully, Raja. Very carefully. He invested the amount in purchasing a new house for rupees 4 lakh. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀ? ਸੇਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੈਕਸ਼ਨ 54 ਚ ਕੀ ਸੀ? ਯੈਸ, ਇਟ ਵਾਸ ਫॉर ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਐਚਯੂਐਫ. ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਕੀਤਾ. ਐਗਰੀ? ਸੇਲ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਊਸ, ਪਰਚੇਜ਼ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਊਸ. ਸੇਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ. ਐਂਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਸ ਪਾ ਲਈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਸੇਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਓਨਲੀ ਪਲਾਟ. मतलब ओनली लैंड ओनली प्लॉट. यस और नो? मतलब ਇੱਥੇ 54 नहीं लगनी. 54 वाज घर बेच के घर खरीद. यस और ਇੱਥੇ ਕੀ लगूगी? अगर कोई भी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करके घर खरीदे, then it applies section 54F. ठीक है. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹਲੇ